Hello everyone, welcome to Legal Card. Today we are going to discuss an important news from the Hindu newspaper that says Health Ministry approves new treatment for multi-drug resistant tuberculosis. स्वास्थ्य मंत्रालय ने मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए नए उपचार को मंजूरी दी है. In a significant move, India's Union Health Ministry has approved a new treatment regime for multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB). This is a major step towards achieving the national goal of eliminating TB by 2025, which is 5 years ahead of the global target of 2030. भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक नए उपचार को मंजूरी दी है. यह 2025 तक टीबी समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले है. Now, before diving into the new treatment regime, let's first understand what exactly is MDR-TB and why it poses such a huge challenge in our fight against tuberculosis. So, let's see what is MDR-TB. MDR-TB क्या है? MDR-TB occurs when TB bacteria becomes resistant to the most effective anti-TB drugs, making treatment complex. This has posed a significant challenge in the fight against tuberculosis. MDR-TB तब होता है जब टीबी के बैक्टीरिया सबसे प्रभावी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे उपचार जटिल हो जाता है. यह टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी चुनौती रही है. With multi-drug resistant tuberculosis being such a critical issue, it's essential that we explore the latest medical breakthrough. This is where the new B-Palm regime comes into play. So, what makes this regime so special? About the new B-Palm regime. नया B-Palm उपचार क्या है? The new B-Palm treatment regime includes 4 drugs: bedaquiline, pretomanid, linezolid, moxifloxacin. This combination has been found to be safer, quicker, and more effective than previous multi-drug resistant tuberculosis treatments. It reduces the treatment duration to 6 months compared to 18 to 24 months earlier. नया B-Palm उपचार 4 दवाओं से मिलकर बना है: बेडाक्विलिन, प्रेटोमोनिड, लेनेजोलिड, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन. यह संयोजन पहले के MDR ट्यूबरक्लोसिस उपचार से अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी पाया गया है. यह उपचार अवधि को 6 महीने तक कम कर देता है, जबकि पहले 18 से 24 महीने लगते थे. Now, while this treatment is a game changer on its own, it is also a crucial part of India's larger goal to eliminate tuberculosis completely by 2025. Let's take a look at how this aligns with the country's ambitious National Tuberculosis Elimination Program. Let's look at the National Tuberculosis Elimination Program. राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम. India has set an ambitious goal to eliminate TB by 2025 under its National TB Elimination Program 5 years ahead of the global goal of 2030. The introduction of this new regime is a crucial part of this mission. भारत ने 2025 तक टीबी समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो इसके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले पूरा करना है. इस नए उपचार का परिचय इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. Now, of course, the success of any program depends on the effectiveness of the tools used. So, why exactly is the B-Palm regime considered more effective? Let's break down the key advantages. Advantages of the B-Palm regime. B-Palm उपचार के फायदे. The first one is faster and safer. तेज और सुरक्षित. This treatment is quicker and proven to be safer, reducing the duration of treatment to just 6 months. यह उपचार तेज और सुरक्षित साबित हुआ है, जिससे उपचार की अवधि केवल 6 महीने तक कम हो गई. The second one is cost effective, किफायती. It is cheaper, reducing the financial burden on both healthcare systems and patients. यह किफायती है और स्वास्थ्य प्रणाली और रोगियों दोनों पर आर्थिक बोझ को कम करता है. The third one is high success rate. उच्च सफलता दर. The combination of drugs has shown a high success rate in curing MDR-TB, offering hope to over 75,000 MDR-TB patients in India. इन दवाओं के संयोजन से MDR-TB के इलाज में उच्च सफलता दर देखी गई है, जो भारत में 75,000 से अधिक रोगियों के लिए आशा की किरण है.
Now, these advantages not only benefit India's health system but also have a wider global impact. In fact, India's leadership in combating TB through innovative treatments like this can set an example for other high burden countries. Now, let's look at the global and the national impact of this. India's leadership in combating TB will have a significant global impact, especially for other high burden countries. Achieving the TB elimination target by 2025 will set a global benchmark in health innovation. टीबी के खिलाफ भारत की ये पहल वैश्विक स्तर पर भी अन्य देशों के लिए एक उदाहरण साबित होगी। 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करना स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में एक वैश्विक मानक साबित रहेगा। Here, it is also important to note that these developments would not be possible without proper regulatory oversight. The approval of this regime, especially with the addition of the drug Pretomanid, highlights the role of regulatory bodies in fast-tracking important medical solutions. Now let's look at the regulatory approval and importance. नियामक अनुमोदन और महत्व. Pretomanid, a key drug in the regime, has been approved by India's Central Drug Standard Control Organization. This marks a milestone in the country's national TB elimination program. इस उपचार बी पाल्म की प्रमुख दवा प्रेटोमोनिड को भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह देश के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। Thus, summarizing it, the approval of the bee palm regime is a major milestone not just for India but for global health. It is essential for anyone interested in the health reforms to be aware of such developments. And that's it. We have covered the critical aspects of this new treatment and its implications for India's TB elimination efforts. Thank you. If you are preparing for UPSC or any other competitive exams, make sure to include this key topic under health and governance. Thank you for watching. If you found this video informative, please like, share and subscribe to Legal Card for more in-depth legal analysis. Till then, thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लीगल कार्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए आगे से वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।